Okay, so namaskar all of you. So we will be starting with test 2. Test 2 tamara history ro test thila. Okay, modern Indian history, history of Odisha. तो आज आम सेक्शन 8 टा डिस्कस करिबा तार जो क्वेश्चंस देला 10 टा क्वेश्चन. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमर थिला सेक्शन ए रो जोटा कि 150 वर्ड्स आउ हमको तको 7 मिनिट्स रे लिखियार अछि. ओके, 7 minutes. Discuss the major Muslim socio-religious reform movements of the 19th and 20th century. Okay, a type of questions aguru already. Okay, asi sarichi. तो एथरे बेसिकली हमको लिखिबार कोन अछि. ओके, स्ट्रक्चर कोन रहइबो एथरा आंसर रो. तो फर्स्ट आपण इंट्रोडक्शन रे टू लाइंस खंडे देबे. ओके, कि 19th और 20th सेंचुरी रे कि मुस्लिम सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स. ओके, what were the major drivers, okay, of those reforms? Key modernity aniya pai, revitalization of the Muslim community. Okay, तो एटा जो मॉडल आंसर्स जोटा कि ऑलरेडी आपको दिया ही जाइए सेटा थरे ताको देखि देबे. यू पिक अप द पॉइंट्स. यू कैन नेवर राइट लाइक द मॉडल आंसर. ओके, सेटा तो केबे भी होबनी कि आपण मॉडल आंसर भलिया ही लिखि देबे ताको. ठीक अछि, बट से पॉइंट्स उडा सेगुडा टिके माइंड रखि कि आपण निज लैंग्वेज लिखिबे ताले आपण बेटर मार्क्स पाइबे. ठीक अछि, तो एथरे पॉइंट्स को सो टू लाइन रो इंट्रोडक्शन देबे. ओके, सो व्हाई डिड द मूवमेंट अराइज. ओके, so both good reasons thila. For example, decline of Mughal empire. Okay, rise of the British colonialism. Okay, so and the orthodox sect, they thought that the प्राय लोक माने they are going astray. ठीक है, तो तांको फुनी ठीक बाटरे आनिया पई. Okay, so that they adapt to Islamic teachings, right? तो सेटा भी तांकर गोटे एम थिला, राइट. तो एथरे मेनली हमें तीनटा मूवमेंट विषय हमको लिखिबार अछि. फर्स्ट आसिला आपनकर अलीगढ़ मूवमेंट. ओके, 10 मार्क रो क्वेश्चन, सो कीप दैट इन माइंड. ता माने 7 मिनिट रे मु सारीबी 150 वर्ड्स रे, तो बेसी लिखि ही पारिबेनी मु. ओके, सो फर्स्ट you can just go through the model answer. Model answer रे मु just खाली तारो model answer रो okay तारो structure टा कहूची. Okay, the first, that is the Aligarh movement. Okay, Aligarh movement ऊपर आपण को लिखिबार अछि. कोन लिखिबे सेतरे बेसिकली only 2-3 lines you can write. Okay, काहे ना 7 मिनिट रे other things also you have to write. Okay, तो किए स्टार्ट करिथिले सेटा लिखिबे. Founded by Sir Syed Ahmad Khan. Okay, if you remember the date you can write. Date मने नाही, जदी year मने नाही भी ठीक अछि. 1864. emphasis कोन थिला. Okay, modern education ऊपर emphasis थिला. Okay, so aims उडा clearly लिखिबार अछि. कोन फर्स्ट ला modern education, western science and intercommunal harmony. Okay, ठीक अछि. तो एगुडा रहला आपनकर. तापरे what was its gift kimba actually taro major contribution ta kon hela. AMU, okay, Aligarh Muslim University. So that you have to write that during this movement, or this movement resulted in the establishment of the Aligarh Muslim University, जोटा कि आज पर्यंत भी Muslim intellectual discourse को okay shape करे, right? So AMU ऊपर आपण को लिखिबार अछि. It is first movement. Okay, you can't write more than that. See, everything is that 7 minutes on Sariyaraj. Okay, seta mate mind rakhiya padibo. In 7 minutes I have to finish it. Tapare Aligarh movement pare next important Muslim movement jota reform movement, that was the Deobandi movement. Okay, so again, if you remember the dates and all, you can write.
Okay, the Deobandi movement. So 1867. Okay, तो एटा टिके more orthodox थिला. Okay, आरो goal कौन थिला? Religious purification and adherence to Islamic principles. Okay, तो आरो ये कौन establish कला? It established the Darul Ulum Deoband. Okay, so it is a renowned center for Islamic scholarship. ठीक है. So यही point जोड़ा आप लोग को देखिबार अछि. आरो गोर कौन थिला? जेमति कि अलीगढ़ मूवमेंट रो modernity, modern education. Okay, थिला. आरो basically religious purification and adherence to Islamic principles. Okay, religious purification and adherence to Islamic principles. ठीक है. तापरे थर्ड टा अपन लिख परिबे, that is the Ahmadiyya movement. ठीक है. Ahmadiyya movement. So ये टिके आंकर belief टा from the mainstream Sunni Muslims टिके अलगा थिला. Okay, again if you want to give dates and all, you can give. Okay, देखिए देवे सेटा model answer रे 1889. Okay, founded by Mirza Ghulam Ahmad. And so basically तांको tenant कौन थिला? सेटा टिके unconventional तांको tenant थिला कि they considered Ahmad, okay, Ahmadiyya movement जोटा, to be a prophet after, okay, Prophet Muhammad. So जो माने सुन्नी मुस्लिम्स में जो mainstream Muslims माने थिले, okay, सेमना को oppose कले. But in certain parts, for example, in a vast part of Pakistan, okay, it got lot of support. ठीक है. तो ता ऊपर आपण देखि परिबे. That is Ahmadiyya movement. Okay, so one or two lines in conclusion. Two lines लिखिया बे time हबनी 7 मिनिट रे आपनको. So one line conclusion रे कि कोन actually आरो result टा कोन हैला. Okay, intellectual growth, social reform and overall development of the Muslim identity in modern India. ये तीनटा point अपन conclusion रे लिखि पारे. Okay, so this is the first question. Now come to the second question. Second question was basically discuss the causes and impact of non-cooperation movement. Direct question, causes and impact. The times of Ajati. Okay, Sir, this question 2. hello, sir, namaskar. Causes and impact of non-cooperation movement. Okay, so let us first discuss the causes. So Arabi Simti Gote, okay, why this non-cooperation movement was important, right? ताऊपरे गोटे दी लाइन अपन लिखि परिबे. Okay, ताऊपरे causes को आसीबे, impact को आसीबे, right? So जिते बेले आपण लिखुचंती तार introduction टा तार aim टा भी लिखि देबे. Okay, so self governance or swaraj, but through non-violent means, like mass mobilization ithila. Okay, and pressure was put on various institutions that you know dissociate yourself with the British. तो सेटा आपण लिखि परिबे. Okay, केबे स्टार्ट हितला कोन? Started by Gandhiji 1920. सेटा भी आपण ताको लिखि परिबे एडा introduction रे. केमसे दी टाइम्स ऑफ पचारजी causes and impact. So when I get the question paper कि जेतरो गोटा आंसर टा लिखुजी एडा प्राय समस्त जानथिबे, जो डायरेक्टिव्स उडा मते अंडरलाइन करिवार अछि. सपोज मते एक क्वेश्चन टा बे मिलला, मुझे अंडरलाइन कर देबी causes और impact. कारण मते जल्दी जल्दी लिखिया पड़ियो ना 7 मिनिट रे. तो केबे केबे कोन मु खाली causes ही लिखि छाड़ दे. मते लागिला मु सब लिखि देछि, किंतु मु खाली causes लिखि छाड़ दे. Okay, causes and impact of non cooperation movement. ठीक अछि. So let us discuss causes कोन हबो. What would be the causes? So major causes आपनकर, okay, lot of causes are there, but 7 minutes से कौन हमें लिख पारे. सब important. तो first चला obviously the Rowlatt Act. Okay, 1919 रो Rowlatt Act. सेटा first अपन लिखिबे कि without any trial and all, the British got the authority, okay, to arrest and detain anyone. ठीक है. So that is the Rowlatt Act. Causes the first आपनकर Rowlatt Act.
Okay, the Rowlatt Act. ତାପରେ ଆସିଲା ସେ ତାର ଯେତେବେଳେ one of the consequences of protest against the Rowlatt Act, okay, that was the Jallianwala Bagh massacre. ସେଟା ବି 1919 ରେ ଓକେ ତ ସେଇଟା ଆହୁରି ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ବଢେଇ ଦେଲା ଓକେ or ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କର you can say it gave more life okay to the movement. So Jallianwala Bagh massacre causes ଆମେ ଲେଖୁଛୁ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଆଉ ବି ଗୋଟେ ରିଜନ ଥିଲା ତାର that is the Khilafat movement. ସେଟା ତାର cause ନଥିଲା actually but ultimately it merged with the Khilafat movement. Okay, Khilafat movement, you know, that is, the Ottoman Empire thila. Okay, so whatever terms and conditions they were given by the British and the others, those who won, okay, that was basically, mm, taken as an insult by the Sunni Muslims. Okay, ତେଣୁ ସେମାନେ protest କଲେ ଆଉ this Congress leadership ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ବି we will support them. Okay, although Khilafat movement directly had nothing to do with the Indian freedom struggle. Okay, India freedom by Khilafat movement directly linked nathila. Okay, so third one is Khilafat movement. Okay, Khilafat movement again is not a cause of it, but now you come to the impact. ଏଠି ଆମେ କଣ ଛଅଟା ଲେଖୁଛୁ ସିନା ଏଠି ମଡେଲ ଆନ୍ସର ରେ ଦେଇଛି ଏଟା କେବେ ବି ଲେଖି ହବନି 7 ମିନିଟ ରେ 6ଟା ଓକେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ ହେଲା ଆର ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରେ ପॉलिटिकल अवेकनिंग ହେଲା लॉट ऑफ यंगस्टर्स बहुत छोट छोट पिला भी ସେମାନେ ओके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रे बेसिकली दे participated at some level or the other so political awakening okay तार 1 2 एगुडा जहा मु लेखु जोडा पॉइंट्स उडा आपण तापरे 1 2 लाइंस ता ऊपर जहा बुझिले कि मॉडल आंसर थरा देखि देबे सेतिर आपण लिखि परिबे ओके पॉलिटिकल अवेकनिंग ओके पॉलिटिकल अवेकनिंग तापरे आसिला इकोनॉमिक इंपैक्ट सो बॉयकॉट कले ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस रो ब्रिटिश गुड्स रो सो सिग्निफिकेंट डिसरप्शन हैला एटा ब्रिटिश गुड्स by okay so economic impact okay tapare third point hela due to this social reforms okay also sped up right mainly abolition of untouchability kai ki mass movement re apun to koi pare na ye asibo si asiboni so everyone has to go together okay so untouchability bhi apun ko sei hisab re kamila empowerment of women were had to be integrated nahale se force asiboni right so social reforms re setare untouchability abolition of untouchability it you know uh, helped it a lot because everyone had to be united and empowerment of women so social reforms next upon likh paribe impact re setare puni dita apna likh paribe untouchability okay au ଆପଣଙ୍କର women okay empowerment in essence ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ impact କଣ ଆସିଲା ନା now it was very clear that Gandhiji okay is a mass leader so Gandhiji's leadership okay ଆଗକୁ ଯାଇକି ଯେତେ ବି ବଡ ବଡ mass movements ହେଲା freedom struggle ସାଙ୍ଗେ related Gandhiji ko under re ହେଲା okay so ସେଇଠି he emerged as a leader who was accepted okay at that time not only in India even okay world re भी ସେଇ टाइम रे आउता आगु ओके जेते सेई टाइप रो सबु लीडर्स माने अछंती किबा आपण कहि पारे जो माने फाइट करिसंती ओके तांकर अंडर प्रिविलेज लोकन पई मार्टिन लूथर किंग जूनियर फॉर एग्जांपल okay and many other examples are there Nelson Mandela hele all have been influenced by Gandhiji right so Gandhiji's leadership सेटा भी गोटे तार impact आपण देखि परिबे
ओके 7टा पॉइंट हो गलानी 7 मिनिट रे केबे भी लिखि हबनी बट मु 7टा पॉइंट जानथिला एटलीस्ट 5टा तो लिखिबी ठीक अछि गोटे पॉइंट तार गोटे लाइन एक्सप्लेनेशन दैट इज हाउ यू कैन राइट ओके or what you can do is you can write a sentence so it promoted political awakening by this and that so political awakening the underline habo okay it had significant economic impact underline kar del to gote sentence re dita kama sarla okay sub headings suda highlight kar deli plus mate gote line likhiya katha likhi de ठीक अछि काहे कि ना मॉडल आंसर रे जोटा देखि सेटा बही पई भलो एटा हला द पॉइंट ओके आउ तापर द एक्सप्लेनेशन बट एग्जाम में मिलिबोनी टाइम सेति सो यू कैन फॉलो दिस अप्रोच यू राइट द ओके सेंटेंस in which that keyword has to be there and underline the keyword okay got it so your main जिनसे देखिया होची 7 मिनिट रे मु सारी आउ 10 मार्क क्वेश्चन रे जनरली हमरो फिगर्स करिवा दरकार नाही सेटा हमें 15 मार्क क्वेश्चन रे देखिबा आ सब थरे करा दरकार नहीं हमें जो थरे भाबुचु कि एटा रेलेवेंट सेठी हमें कर पारी ओके so this is second question now let us go to the third question तो तारा सेमति भी आपण गोटे कंक्लूजन दे परिबे ना कोन एथर कंक्लूजन रे आपण लिखिबे कि 1922 रे सेटा सस्पेंड हे गला ड्यू टू द चोरी चोरा इंसिडेंट बट स्टिल ओके इट वेंट अ लॉन्ग वे okay and was a kind of turning point in the Indian independence struggle okay making non-violence as a powerful tool against the colonial okay rulers ठीक है तापरे now come to question 3 एटा ओडिशा हिस्ट्री ऊपर write a short note on the contribution of Utkal Sammelani in the creation of and development of modern Odisha okay creation development dita ऊपर हमको focus करिवार अछि right so first अपना तारा गोटे introduction दे परिबे okay so it was founded by Madhusudan Das 1903 okay and it was a socio-political organization main demands one thila unification of Odia speaking regions and promotion of Odia language culture and literature okay and empowerment of Odia people तो ए तीन चारटा जो तंगरो मेन गोल्स थिला सेटा इंट्रोडक्शन रे हमें दे दे परिबे ओके सो एटा रेफर करिवे आपनकर मॉडल आंसर ओके तो एथरे पचारले थाले मते कोन contribution of Utkal Sammelani in creation and development okay so first asila हमें points हिसाब रे देखिबा cultural renaissance okay cultural renaissance so how it brought about cultural renaissance in Odisha so the revival of and promotion of Odia language and literature okay कि official काम रे Odia use हो कहीं ना आगुरु तो Odia use हो नथिला okay due to the influence of British और तांका आगुरु the the sultans of Bengal Mughal influence okay तो से गुड़ा थिला even आज भी अपन जदि हमर revenue रे जो terms गुड़ा use हुए सेटा देखिबे सेटा सब ओडिया नु ठीक अछि फारसी terms भी बहुत गुड़ा अछि एतरे right so anyway so cultural renaissance एथरे आपनकर दी तीनटा पॉइंट लिखियर अछि revival and promotion of Odia language literature okay and culture ठीक अछि तापर सेकंड आसिला जोटा कि तार पॉलिटिकल एस्पेक्ट थिला इट वाज अ सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सो यूनिफिकेशन ऑफ द स्टेट ओके सो एटा तांगर सबुटु बड़ अचीवमेंट बोली हमें कहि परिबा पॉलिटिकल यूनिफिकेशन political unification okay so 1936 रे ओडिसा जो सेपरेट स्टेट हैला तो फर्स्ट स्टेट इन इंडिया okay to be carved out based on language okay this was obviously before independence right 1936 but anyway first state based on language is Odisha okay 1936 right
This was obviously in British India. So it got a second. Tapare semane kon kale na, they also started with the Satyavadi movement and all. So seti out answer la ki educational development, okay, ta upare bahut stress rahila. So educational development, focus on educational development. So a lot of schools were, opened. Now, etere amaro Satyavadi movement ro apano example rakhi paribe. Okay. So focus on establishing schools and colleges. Okay. So educational upliftment hela total Odisha ro. Okay. And accordingly, one or two lines ro conclusion apano depare. Right. You try to write it within 7 minutes. ठीक अच्छे जे नुआ अच्छा प्रथम प्रथम लिखुंट ताले आपण 5 थर 10 थर जिते थर आपन को मॉडल आंसर पढ़ियार अछि पढ़ दियंतु हैला मु एमती कोन कि आखि बंद कर लिखंतु आपण मॉडल आंसर पढ़ी कि तापर लिखंतु सो दैट आपन को आस्ते आस्ते ओके सेटा बिल्ट अप होबो केमती मु आंसर ता लिखिबी राइट सो बट टाइम संगे एपट सेपट करंतु 7 मिनिट्स ना 7 मिनिट्स डोंट टेक इट टू 8 9 10 मिनिट्स ठीक अछि त आ सेमती जेतोले हमें नेक्स्ट सेशन रे 250 word answer गुड़ा लिखिबा तो से 10 मिनट 10 minutes you will stop. Okay, so next let us go to the next question, that is question number 4. Illustrate the variances in methods employed by Subhash Chandra Bose and Mahatma Gandhi in their fight for India's independence. Both common question, both रो पढ़ी अवैटा clearly आपण को देखि परिबा कथा. Okay, so कौन लिखिबा ताले एटा को को ये रे, so both had the same aim, goal same थिला दी जन को introduction लिख परिबा, but path से माने different choose कले. Okay, गांधी जी को path कौन थिला, non violence excuse me, and civil disobedience, non violence and civil disobedience. Okay, और बोस को कौन थिला, नेताजी को थिला armed struggle and international alliance. एटा major difference रहला. Okay, तो introduction रे भी हमें एटा दे परिबा, just refer to your model answer. Okay, so गांधी जी को non violence and okay civil disobedience. Okay, और नेताजी को okay armed struggle and international alliances. Okay, it a fundamental difference तंगर approach रे थिला दी जण. Okay, variation in methods जदि हम देखिबा, ideological differences and approaches to British rule. Okay, so first ideological differences कोन. Okay, so it obviously you know that Gandhi ji, okay, say he was in favor of non-violent resistance, okay, satyagraha, civil disobedience, say something. But Netaji, he was in favor of armed struggle. Okay, आउ बाहरु जदि support मिलुची तो सेतरे किछि असुविधा नहीं, which was not the case with Gandhi ji. Okay, Gandhi ji को थिला कि आमे जा करे आमे आम देश भितर करिया. ठीक है, हाँ सेमती किए गोटे सेमती पॉलिटिकल सपोर्ट दउची तो ठीक अछि, बट नॉट एक्टिव लॉजिस्टिक एंड मिलिटरी सपोर्ट. ठीक है, सो एटा फर्स्ट है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस. तापरे अप्रोच टू द ब्रिटिश रूल, सेटा नेक्स्ट पॉइंट अपन लिख परिबे. अप्रोच टू द ब्रिटिश रूल. ओके, अप्रोच टू द ब्रिटिश रूल कोन ना, गांधी जी को कांसेप्ट कोन थिला, सीए he wanted to basically shake the British conscience, and he was successful in lot of cases. He was successful in lot of cases. तो सी कौन करथिले ना अपील करिवे, फास्ट करिवे. ठीक अछि,
तांको कंडीशन जदि खराब ऑब्वियसली लोक माने भी तो से प्रेशर टा ओके ब्रिटिश ऊपर पडुथिला सबु जगह न होई पारे बट ओके बहुत जगह रे हिता किसी जगह रे ही परलानी से रोल अटैक परे जो जा जा सु हेतिला ओके टिके आगु को जदि हमें जिबा भगत सिंह गरिका ओके जेतले तांकर ट्रायल हैला आ गोटे लोक थिले फांसी दंड दियाला गांधी जी ओके इरविन संगे सेतले पैक्ट तांकर हबार थिला तो सेटा बेसिकली सी तांका पाखे पावर थिला से जदि चाहिए तांको रक्षा करि परथान ओके बट तांको प्रिंसिपल अगेंस्ट सेटा थिला अपार्ट फ्रॉम सिविल सर्विस बुक्स जदि आपण एई जो जिनसोडा पढिया पे चाहउचंदी तो दैट आपणकर भी लैटरल रीडिंग आउ नॉलेज टा भी बढ़िबो सेतरे गोटे बहुत भल बही अच्छी इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट दिस इज ऑब्वियसली ऑफ टॉपिक ओके द ट्रायल ऑफ भगत सिंह बिकॉज भगत सिंह रिमेन्स one of the top revolutionaries and much loved by the youth so the trial of Bhagat Singh लिखिଛନ୍ତି एजी नूरानी Amazon गरिकारे अवेलेबल अच्छी those who want those who are interested पढ़ी पारिबे एतरे एक्चुअल हिस्ट्री रो बहुत गुडे डायमेंशन से देखैछि स्पेशली रिलेटेड टू गांधी जी जोडा नॉर्मली हम टेक्स्ट बुक्स रे पढुन ओके सो एटा हमर 7 मिनिट भितरे एतिकी हमर सरी जिवो ओके सो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए आंसर एटा आपनको निजर ओके नॉलेज को बढ़ाया पे मु कहि बुझ पाले तो 7 मिनिट्स मोर हे गला इटी आ कंक्लूजन गोटे दी लाइन रो दे परबी दी जण को गोल थिला एक बट जो रास्ता से माने नेले सेटा अलगा थिला ठीक है now come to question number 5 it again odisha ro aschi discuss the contribution of chandan hajuri to the freedom movement in odisha okay eta podi sarchi multiple times aguru ocs mains re but still very important question so we need to discuss this okay so prathame apan dekhiye chandan hajuri or chauki kuntia he was basically a priest okay in the puri temple okay family priest of रानी लक्ष्मी बाई राइट जिते बड़े सी बाई नथिले तो तांकर बापा घर साइड रो से फैमिली प्रीस्ट थे ओके आउ कोन पॉइंट्स तो कंट्रीब्यूशन देछि फ्रीडम मूवमेंट रे ओके आपनकर मॉडल आंसर रे पूरा तांकर सब डिटेल्स देछि ओके किसी केबे जन्म होइतिले एंड ऑल दरकार नै से गुडा ठीक अछि notable figure especially in rebellion of 1857 okay so second point ता जोडा देछि इंट्रोडक्शन रे देखंतु सेटा social reformer and revolutionary ठीक अछि तो revolutionary हमें तो जानि छि social reformer poem he had written certain things okay जोटा कि हमें अपन ये कर पारे राइट तापर कंट्रीब्यूशन आसिला फर्स्ट आसिला 1857 में तांका रोल कोन थिला रोल इन द 1857 रेबेलियन नंबर 1 okay role in the 1857 rebellion so तांकर डायरेक्ट कांटेक्ट थिला लीडर्स ऑफ द रेबेलियन थ्रू रानी लक्ष्मी बाई ओके तापरे लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस ओके लिटरेरी कंट्रीब्यूशन कोन ना बहुत गुडे पोएम्स से लिखिथिले सॉन्ग्स लिखिथिले ही वाज अ प्रीस्ट इन लॉर्ड जगन्नाथ टेंपल तो लॉर्ड जगन्नाथ का ऊपर लिखिथिले आ मेनली सी गोटे मैन्युस्क्रिप्ट लिखिथिले ओके मनुबाई बोली दैट इज क्वाइट वन ऑफ हिज फेमस लिटरेरी अचीवमेंट्स तो नेक्स्ट है लिटरेरी कंपोजिशन और लिटरेरी contributions.                                                                                                              और लिटरेरी कंपोजिशन
Okay, so poems on Lord Jagannath, okay, and a manuscript named Manubai. Rani Lakshmi Baईଙ୍କର, okay, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ connection with the rebel leadership, ठीक ଅଛି। ତ 1857 ରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର direct contact with rebel leadership, okay। ତାପରେ मॉडल आंसर टा देखो तो अपन आउ गोटे भी देची, ओके, दैट इज जोटा हमें देखिलु रिलेशनशिप विथ रानी लक्ष्मी बाई, ओके, और फैमिली प्रीस्ट थिले, बट एट द सेम टाइम तांको पई सपोर्ट, ओके, और तांकर जो रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश सेथरे भी ही हेल्प्ड, ओके, इन वेरियस वेज, राइट। सो सेटा भी गोटे पॉइंट अपन दे परिबे, ओके। So basically, he was a freedom fighter, revolutionary, and a priest. And that means a religious man. Okay, and also a writer in that sense. Okay, social reformer type of people. Okay, so 7 minutes etiki amaro sufficient. Again, now come to question number 6. This is also related to Odisha history. Discuss the contribution of Chauhan dynasty of Sambalpur in India's freedom struggle. So it basically हमको वीर सुरेंद्र साई के ऊपर लिखा पड़ेगा, ओके, 1857 एंड बियॉन्ड। ओके, सो तो मेजर कंट्रीब्यूशन तंकर कौन थिला? सो फर्स्ट तो हला कि रेजिस्टेंस, ओके, अगेंस्ट द ब्रिटिश, स्पेशली तंकर जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ओके, जा जो को तांको संगे इनजस्टिस हेथिल, राइट। सो कंट्रीब्यूशन कौन? फर्स्ट हला लीडरशिप, ओके, लीडरशिप ऑफ वीर सुरेंद्र साई। तो एठी क्वेश्चन टा हला contribution of Chauhan dynasty of Sambalpur. So directly देनी वी सुरेंद्र साई के ऊपर है। So first हला leadership of वी सुरेंद्र साई, ओके। तो ताकू देखी कि लॉट ऑफ जमींदार आर आल्सो देयर जो माने सेतबले सपोर्ट करे, ओके। तापरे नेक्स्ट आउ कोन कंट्रीब्यूशन थिला ना वीर सुरेंद्र साई एंड ताको परे भी संबलपुर चौहान डायनेस्टी रो, ओके, अगेंस्ट द ब्रिटिश दे स्टार्टेड यूजिंग द गोरिल्ला वारफेयर, ओके। So ताकू देखी कि many others also started using the same thing, okay। এটা second answer, gorilla warfare technique ସେମାନେ यूज करते, ओके। तापरे नेक्स्ट प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस रूल, ठीक अछि, जो ट्रेडिशनल ऑर्डर ऑफ रूल, ठीक अछि, जो लॉज गुड़ा एमाने चेंज कर देले, ओके, थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड अदर लॉज। तो सेटा केमती आगुरु जो ट्रेडिशनल, ओके, लॉज गुड़ा थिला, हायरार्की थिला, सेटा को सेमाने एस्टैब्लिश करया पे चाहते। सो प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस रूल्स, ओके। तपर 1 की 2 लाइन रो आपण कंक्लूजन दे परिबे। तो 10 मार्क क्वेश्चन 1 लाइन कंक्लूजन इज सफिशिएंट, राइट। दैट इज द संबलपुर रो चौहान डायनेस्टी रो कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन 7, delve into the role of Maulana Abdul Kalam Azad, okay, played in India both before
and after achieving independence. तो एटा गोटे एमती क्वेश्चन जो थरे कि आपन को बोथ केना हमर एथर का सिलेबस रे पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया भी अछि राइट. सो बिफोर इंडिपेंडेंस ताको रोल कोन थिला और आफ्टर इंडिपेंडेंस ताको रोल कोन थिला केमती सेटा चेंज हैला ता ऊपर हमको लिखियार अछि. ओके. So what you will write? So first 1 or 2 line introduction. Okay, he was a very prominent statesman, scholar. Okay, journalist, right? ଆଉ ତାଙ୍କର main work ଥିଲା education related. Education minister ଥିଲେ ପ୍ରଥମ. Okay, communal harmony, secularism ତା ଉପରେ ସେ ବହୁତ focus କରୁଥିଲେ. Right? So before independence କଣ ତାଙ୍କର contribution ଥିଲା? So first ହେଲା Hindu Muslim unity. So this is before independence. So Hindu Muslim unity. Okay. Second, so ethere Hindu Muslim unity re, so you can give some data. Okay. For example, जो Al Hilal, okay, weekly journal thila. तो सेथरे mainly जो सब लेखावड़ा थिला, that promoted, okay, interfaith understanding and cooperation. तो example दे परिवे थरे. तापरे second, leadership in the Khilafat movement. ओके तो जो ब्रिटिश और तांकर जो allies माने सब Ottoman Empire संगरे जेमती तांको तांको संगरे जहा जहा सब से माने behave कले किंबा तांको जहा तांको जहा सब निया ही वाला. Okay, so that was a big point of dissatisfaction among the Muslims around the world, Sunni Muslims especially. Okay, तो एमने सीधा ताको in India under his leadership. Okay, this Khilafat movement was one of the prominent leaders of the Khilafat movement. So second point ଆପଣଙ୍କର ରହିବ before independence, leadership of Khilafat movement. Okay, तापरे next आपण देखिबा. So ଆଉ ଗୋଟେ point ଆପଣ add କରି परिबे. Okay, कि just like many other freedom fighters, he was imprisoned and he continued his activism. Okay. Imprisonment and continued activism. ठीक है, এটা হলো before independence. Now after independence তাহলে আমি কোন লিখবা? তো first education তো নিশ্চিত রইব যেহেতু সে first education minister আমার ଥିଲେ. Okay, so first education minister of independent India. तापरे जो सेई टाइम रो जो एजुकेशनल सिस्टम ता थिला कि पॉलिसी थिला. Okay, सेटा बेसिकली आंकर कंट्रीब्यूशन. Okay, so his vision for education system ta kemti hobo na, it should be tolerant, okay, as against a theocratic country. So there's a lot of question about why Maulana Azad, okay, he was made the first education minister. Kaiki Nehru seta chinta kala kaiki na stark contrast. Okay, ame देखिया पे चाहूँ कि पाकिस्तान में कौन है ठीक अच्छे. तो तांकर सेठी कौन से माने कौन केमती कले एंड वी डोंट वांट टू बिकम लाइक दैट. ठीक अच्छे, सेटा गोटे रहला. तांकर जदि हमें एठी तो सेटा लिखिया दरकार नहीं, बट इफ यू रीड अबाउट हिम, ही वाज बोर्न इन साउदी अरेबिया. ओके, साउदी बेसिकली आस्थिले आउ तांकर मॉडर्न एजुकेशन अधिक तांकर नथिला. ठीक अच्छे, तो सी ट्रेडिशनल एजुकेशन ही नहीं थिले, बट ही वाज वेरी प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड थिंकिंग थिले. तेनु जेते सब आपणकर एजुकेशन सिस्टम से डेवलप है
ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଥିଲା କି we have to accept okay the beauty or the teachings of different religions since we are a multi-cultural multi okay faith society. ঠিক ଅଛି ତ ଆପଣ ଯୋଉ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଟା ବନେଇବେ ସେଥିରେ ହିନ୍ଦୁଇଜମ ରୁ ବି ଥିବ ସେଥିରେ the important tenets of Islam okay Christianity and other religions Sikhism okay Buddhism Jainism ସବୁ ମିଶିକି ସେଟା ଥିବ okay so architect of India's education system inclusive education system ନହେଲେ କଣ ହବ ନା ଆପଣ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ କାହା ରାଡିକାଲ କୁ ସେଠି ବସେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତ ସିଏ କଣ କରିଥାନ୍ତେ ନା ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ହ୍ୟାପନିଂ ଇନ ପାକିସ୍ତାନ ଅର ମେନି ଅଦର ଥିଓକ୍ରାଟିକ କଣ୍ଟ୍ରି ତ ସେଠି କଣ ରାଡିକାଲାଇଜେସନ ଲେଭେଲ ପ୍ରଥମରୁ ଏତିକି ଏତେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ଥାଏ କି ଆଉ ପରେ ସେଟା କିଛି like it's very difficult to undo it or erase it from those people okay ଏବେ ପାକିସ୍ତାନର ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ 7-8 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପଚାରିବେ ହ୍ୱାଟ ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ ଅବାଉଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆନ୍ସର ସବୁ କେମିତି ଥାଏ ଓକେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଜରେସନ ଠିକ ଅଛି ହେଇପାରେ ବଟ୍ this was one of the major reasons okay ki kahinki although he was not western education tankara nathila still then he was given this responsibility by Pandit Nehru so architect of India's inclusive education system okay tapare asila that already we had seen jada say before independence before the advocate of secularism and communal harmony ओके तो एठी जो आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज एजुकेशन सिस्टम तो सेतरे आपण ताकू देखि परिबे एग्जैक्टली से सब कोन करथिले यूजीसी ओके so there you can write okay and Indian okay values जोटा हमरो रहबा दरकार so Indian values and heritage that should be reflected in your education system तांकर concept से थिला okay तापरे advocate for secularism and communal harmony जोटा हमें फर्स्ट भी देखते बिफोर इंडिपेंडेंस ठीक है सो तीनटा बिफोर तीनटा आफ्टर 6टा पॉइंट गलानी 7 मिनिट रे केबे भी लिखियो बन 6टा पॉइंट देन 1-2 लाइन कंक्लूजन 1 लाइन कंक्लूजन हम दे पारे okay she was a true statesman a scholar okay and educationist in that way you can and ଏବେ ଯୋଉଟା ଆପଣ ପଢୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ରେ you compare it with what theocratic countries or you can say let's say ଆପଣ କହିବେ କି what people in Pakistan read or what people in even if you see the subject or the syllabus of Israeli schools ठीक ଅଛି ଏବେ ଗୋଟେ BBC ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରେ they were comparing the seeds of hate ଏଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ଆଙ୍କ ସ୍କୁଲ ରେ କଣ ପଢା ହଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ରେ ଆଉ ଆଙ୍କ ସ୍କୁଲ ରେ କଣ ପଢା ହଉଛି ପ୍ୟାଲେଷ୍ଟାଇନ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଅକ୍ୟୁପାଇଡ ଟେରିଟୋରୀ ଯାହା ବି ଆପଣ ଯୋଉ ସାଇଡ ରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ବି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପ ହେଇଗଲା ଓକେ ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି ତ ସେଠି ସ୍କୁଲରେ ପଢା ହଉଛି କଣ ପଢା ହଉଛି ତାକୁ ସେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଦେ ଫାଉଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ କି ଦିଟାରେ ହିଁ ବହୁତ ଭିଟ୍ରୋଲିକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି ଇସ୍ରାଏଲରେ ରିଲେଟିଭଲି କମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଛି ଓକେ ଯୋଉଠିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଇଏ ହେଲା ଇନଫିରିୟର ଆମେ ସୁପିରିୟର ବଟ୍ ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆନ एजुकेशन सिस्टम रे देखिए जो भी मीडियम जहाँ भी आप देखो आईसीएसई सीबीएसई स्टेट बोर्ड यू विल फाइंड दैट दी तीन जिन हम एजुकेशन सिस्टम रो बहुत ही सब जगह फॉलो हुए ओके दैट इज एजुकेशन ओके क्वालिटेटिव एंड इट इज नॉट कम्युनल इट इज नॉट ओके बेस्ड ऑन एक्सट्रीमिज्म
So it is completely secular and modern education. Okay, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ତାଙ୍କର legacy ଆପଣ କହିପାରିବେ, right? ତାପରେ question 8 is very topical, ଟିକେ difficult maybe ବି ହେଇପାରେ. Okay, ଯେହେତୁ ଏଥରକ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମର ଆସିଛି the history of Odia language and literature. History of Odia language and literature. It is related to that. Question number 8. 10 marks, 150 words. 7 minutes ସାରିବାର ଅଛି. Write a short note on the literary works of Odisha. Okay, literary works of Odisha during the freedom struggle from 1885 to 1947. এই টাইম ভিতরে ওড়িশার লিটারারি ওয়ার্কস কোন মেজর লিটারারি ওয়ার্কস ଥିଲା, ওকে তা উপরে ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, রাইট? তো এই টাইমରେ কোন ଥିଲା ন্যাশনালিজম, সো দিস বেসিক্যালি जो ন্যাশনালিস্ট রাইটর্স মানে ଥିଲେ, ওকে। সো ফার্স্ট ହେଲା ক্যারেক্টারিস্টিক অফ লিটারেচর ডিউরিং দিস টাইম। তো ক্যারেক্টারিস্টিক্স ভিতরে ফার্স্ট ন্যাশনালিস্টিক থিমস গুড়া ଥିଲା। সো ক্যারেক্টারিস্টিক্স, nationalistic themes, okay। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି କଣ कंट्री रो केमती लाभ हबो, nationalist sentiments, okay, ताकू ही देखिए आपनकर लिटरेचर टा रहउतला, राइट? So that encouraged many people, many youth, many educated people to join the fight for self-determination, okay। Then patriotic poetry, okay। So many people, many poets, revolutionary poets, okay, देशभक्ति कविता सड़ा सब बना लिखिले, right? Very famous contributors are there, जेटा परे contributors गुडा परे अपन दे परिबे। तापर असला एगुडा हला nationalistic feeling आसीगला, okay। patriotic poetry रहला। तापर आसीला कि social changes भी बहुत होतला, okay। जोटा हमें देखिलु national level रे जेतले mass mobilization होउची सेतेबेल तो आपण कहि परिबेनी एई कास्ट लोक आसीबनी, एई कास्ट लोक आसीबो, so everyone has to come together, ठीक अछि। So from that point of view, during this period Odia literature, okay, also started with social criticism। जो सोसाइटी रे जा सबु मलाइसिस थिला से टाइम रे ता अगेंस्ट रे, okay, writers started writing। So third point अपन से तर लिखि परिबे characteristics of Odia literary works during this period, okay। social criticism, social criticism, ठीक अछि। तापरे पॉपुलर राइटर्स, बहुत पॉपुलर राइटर्स अछंती एंड पॉपुलर लिटरेचर भी अछि केतेटा, ठीक अछि। सो यू कैन स्टार्ट विथ फकीर मोहन सेनापति, ओके। सो बहुत एग्जांपल्स दे परिबे 1892, ओके, चित्र भारती सेटा दे परिबे, अदर आल्सो यू कैन गिव, ठीक अछि। सो इट इंट्रोड्यूस जो चित्र भारती, इट इंट्रोड्यूस रियलिज्म एंड सोशल कॉन्शियसनेस इनटू ओडिया पोएट्री। तापरे सेमती गोपबंधु दास कर आपनकर, सो ओके। सो गोपबंधु दास कर, ओके, तांकर भी lot of writings were there, okay। For example स्वदेशी संगीति 1909 रो, okay। So सेथरे social commentary, patriotism, self reliance, national unity सब एगुडा included थिला। तापरे राधानाथ राय, okay। So there also, then वंदे उत्कल जननी आपण सेटा मेंशन करि परिबे, ओके। कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र 1912 रे, okay। Then many newspapers and periodicals were also there during this time, जेमति उत्कल साहित्य थिला 1897 रे, ठीक अछि।
तापरे समाज पेपर 1919 रु ओके सेगुड़ा आपण बट 7 मिनिट्स रे एते जिंस देय होबनी आ भीतर जार दी तीनटा आपण भाबिले ठीक सेटा आपण लिख परिबे बट स्ट्रक्चर हैज टू बी लाइक दिस ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 एटा भी ओडिशा हिस्ट्री रो that is discuss the main events during the revolt of 1857 in Odisha. तो सिपाही मिटिनी बेले ओडिशा रे कोन कोन हेतिला ओके ता ऊपर क्वेश्चन टा अछि सो फर्स्ट एथरे एक्चुअली टिके आपण ना एटा डाटा भरिका दवा पे पड़ियो ठीक अछि तो मु कहि दउ एटा आपण पुनी देखि देबे ये ऑनलाइन से तो फर्स्ट आसिला कटक रेबेलियन ओके तो सिग्निफिकेंट रेबेलियन कटक रे ओटा हेतिला लोकल सोल्जर्स बट देन कथाडा हला कि सेटा बहुत ही जल्दी ताको ओके सप्रेस करा वाला सो यू कैन स्टार्ट विथ दिस कैन आप क्वेश्चन नो डिमांड कोन ओडिसा रे मेजर इवेंट्स कोन हेतला सेतो ओडिशा certainly was not one of the major centers or nerve centers of the revolt okay so first hela okay the Katak rebellion tapare uh, role of local leaders that also you can write so V Surendra Sai and even you can write about the contribution of previous okay such revolts in Odisha तो आपण बक्सी जगबंधु को विषय भी लिखि परिबे although not directly okay but पाइको रेबेलियन रे जहा जहा सब हेतिला that continued forward okay so बक्सी जगबंधु inspired in a way okay से जहा पाइको रेबेलियन बेले हेतिला okay that helped the uh, mutineers during this time ठीक अछि वीर सुरेंद्र साई देन तांकर फैमिली रो तांकर ब्रदर्स करिका जमींदार्स करिका संबलपुर यू नो एरिया रो से पाखापाखी एरियास रो मेनी जमींदार्स वर देयर हु सपोर्टेड हिम ओके सो तपरे आउ कोन कोन जोडा में कहलु अपराइजिंग एट संबलपुर अंडर वीर सुरेंद्र साई ओके तापरे पुरी रे ठीक अछि एठी एक्चुअली कोन ना बहुत ही देछि आपनकर तार सब डिटेल्स रा देछि ओके को रेजिमेंट कोन सेडा तो केबे भी आपनको ऑन रहबनी ओके बट स्टिल देन जून 18 1857 ओके सेकंड बंगाल इन्फैंट्री रेजिमेंट तो से माने पुरी रे स्टेशन थिले सो सेठी अपराइजिंग हैला राइट सो अपराइजिंग एट पुरी एटा बहुत ही फैक्चुअल जिंस एक्चुअली these things are like आपन घोषि की रखे किछि माने आपनकर दरकार नै एटा घोषि की रखे राइट तापरे सीज ऑफ बरगढ़ so the Bargad fort which was a British held fort सेटा सुरेंद्र साई और तांको फोर्सेस बहुत दिन पर्यंत ताको ओके ताको ब्लॉक करी के रखले सीज करी के रखले सीज ऑफ बरगढ़ फोर्ट ओके सीज ऑफ बरगढ़ फोर्ट तापरे आ कोन थिला ना ब्रिटिश रिप्रेशन ब्रिटिश तो सेमति तापर बस्टू ना दे suppressed in different places okay संबलपुर गरिका रे भी आ बाकी जगह रे भी इट वाज suppressed okay so जेहेतु स्पेसिफिकली पचारछि कि ओडिसा रे कोन हेतिला 1857 रे ए टिके आपन को लेखिया पे पडिबा विषय ओके
means it is basically data based. Okay, data टी तो पे पड़ियो. Next एटा directly आपनकर जा syllabus रे अछि social basis of Odia nationalism. Okay, social basis of Odia nationalism directly from the syllabus. So last question एटा section A रा 10 mark question एटा discuss the social basis of Odia nationalism. Okay, तो first अपन बुझंतु requirement कोन रहउची question रो. Okay, कि जो हमरो Odia nationalism अछि. Okay, see अपन Odia nationalism, Telugu nationalism, Tamil nationalism, so linguistic nationalism based on language. So obviously language रो बहुत बड़ा role है सर. It's quite obvious. Okay, so social basis of Odia nationalism मु चारि पांचटा डिस्कस करबी आउरी बहुत अछि बट एटा आपण मने रखि परिबे राइट. फर्स्ट है linguistic identity. Okay, so obviously we are Odia people and no से हिसाब रे तांगर linguistic identity. First आसेला social basis रे linguistic identity. Linguistic identity. Okay, so that means we are like part of India but we are different. Kind of say time रे जदि हमें देखिबा, so there are certain languages कि जेमति कहले ओडिया टा गोटे अलग language नुह. Odia hela gote sub kind of language of let's say from Bengali for example. बहुत जन सेटा जो तो बड़ा सब writers माने थे. In fact, से time रो literature okay was based in Calcutta. Bengal रो बहुत बड़ा से तो role थेला. Okay, अब हमें जेतु Bengal रो part थिलु आगे रे तापरे बिहार रो part रे तो से influence उड़ा भी रहिला. Same thing they try to do with Assamese also. अपन देखिए Bengali, Odia, Assamese बहुत ही पाखापाखी. Okay, so anyway, so सेटा गोटे issue थिला. Linguistic identity हमारा separate हबारा अछि. Okay, so this was the first okay factor. तापर आसिला cultural heritage. हमारा जो traditions, temple traditions हला, okay, religious practices हला, folk art हला, एवढा सबु. So cultural heritage. ସେଥିରେ ଫୁଡ୍ गरिका भी ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ड्रेस गरिका भी ରହିବ राइट. तापरे historical consciousness. So Odisha's history right from let's say Kharavela, okay, the great time of the Gangas, okay, तापरे other Gajapatis and जब entire हमारा dynastic history जदि हमें देखिबा. So historical consciousness. Okay, historical consciousness. एटा गोटे base for Odia nationalism. तापरे आसिला इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस. ठीक अछि. इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस कोन? Okay, so economic grievances तो हमारा बहुत बड़े issues थिला राइट. ब्रिटिश को संगे जेमति बाहर भी बाहर देश रे बाहर राज्य रे जा से माने करथिले हमरो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज गरिका. ओके, हमरो एग्रीकल्चर गरिका सबु से माने डिस्ट्रॉय करबा ऊपर थिले राइट. So economic exploitation which they were doing in all parts of India, एठी no exception. Okay, तो एठी सेम जिंस होतला. जो माने landed people थिले okay, zamindars and all तो से मानु को भी तांकर जो frequent change in the zamindari system होतला से माने they were also okay not very happy right. So here what happened, people and माने the common masses and the classes elites माने थिले दी जण गोटे गोटे पॉइंट रे मिसी गले. ठीक अछि काहे ना ये जमींदार मानको भी प्रॉब्लम थिला कि ये माने बहुत हैरान करछन्ती ब्रिटिश माने. ओके, सबला खाली तांको लाभ देखुछन्ती. तो हमरो स्टेटस आस्ते आस्ते कमी जाउछ. आउ लोक माने तो आस्ते भी चिड़ी की थिले बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन. ओके,
तापर एठी आउ गोटे बहुत बड़ एज आई टोल्ड यू दिस लैंग्वेज जेतरा में गोटे लैंग्वेज किबा गोटे रीजन रो नेशनलिज्म विषय कहूछु सेतरे गोटे सन ऑफ द सॉइल अप्रोच आउछ ठीक अछि तो ओडिसा रे थैंकफुली सेटा एते बेसी नाही इफ यू गो टू सर्टेन स्टेट्स सेठी कोन से माने कहबे ना भाई आमे ए स्टेट रु आछू ना तो हमर प्रथम राइट एठी अछि ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन सेमति किछि ओके राइट्स दोनी बट स्टिल देन lot of places there if you you know amar jobs nei jauchanti okay lot of I won't be naming the states you know okay both were states achi west and you know western India and other places where ए सब जिंस आज पर्यंत भी अछि okay fortunately odisha re egoda ete nahi but anyway pride okay uh, for the fact that you know we are odia people तो सेटा कोठु ना आपनकर लैंग्वेज और लिटरेरी मूवमेंट्स और जो रेनाइसा हला ओके ता संगे रिलेटेड सो लैंग्वेज एंड लिटरेरी रेनाइसा ओके सो एथरे कोन ना हमर लिटरेचर तो हमें देखिलु बहुत लॉट ऑफ पोएट्स राइटर्स दे कंट्रीब्यूटेड लैंग्वेज भी ओडिया लैंग्वेज भी ओके बहुत भलो रे से टाइम रे डेवलप कला as a result we are the only okay non sanskrit indo aryan language jaku दिया हिच आपन क्लासिकल आख्या ओके क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया बाकी सब आपन को द्रविडियन लैंग्वेजेस साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हैला संस्कृत ऑब्वियसली रहला बट द ओनली नॉन संस्कृत इंडो आर्यन लैंग्वेज है ओडिया ओके बेंगली की भी एपर्यंत दिया ही नहीं मराठी की भी दिया ही नहीं राइट सो लैंग्वेज एंड लिटरेरी रेनाइसेंस तापरे नेक्स्ट लास्ट पॉइंट दैट इज ऑलरेडी हमें कवर कर सारछु कल्चरल एंड हिस्टोरिकल ओके आइडेंटिटी ठीक अछि तो एतिकी दीज आर द मेजर ओके basis or social basis of Odia nationalism. गोटे गोटे लाइन भी हमें लिखिले within 7 minutes very difficult to complete it. Okay, 4 or 5 points we have seen. So it is social basis of Odia nationalism. Okay, so these are the 10 questions of section A. ये सब गुड़ा आपको 7 मिनट रे सारिबार अछि जो माने ऑलरेडी लिखि चंती just compare with your model answer आपण मे बी 2-3टा बढ़िया पॉइंट लिखछन जोडा मॉडल आंसर रे नथिबो मॉडल आंसर रे केते पॉइंट्स जोडा मे बी आपण भाबी नथिबे तो ताको मिसांत okay then you get a holistic answer see you can never write like the model answer रो काम एति कि से एति कि पॉइंट्स होबा कथा कि मिनिमम गोटे आपण को दउची कि हां एति कि पॉइंट्स ओके हेले ठीक ठाक मार्क मिलिबो केतेटा पॉइंट से मिस भी करथै पर जोडा कि मु लिखि छि आंसर तो ताको टिके कंपेयर करियो जो माने नेक्स्ट ईयर पे प्रिपेयर करछन कि ता नेक्स्ट ईयर पे प्रिपेयर करछन बट आंसर राइटिंग पई ओके आपण चाहउछन हमर लाइव आंसर राइटिंग भी होची जोटा कि 2 आवर्स रो ऑलरेडी आपण को दिया जाउची क्वेश्चंस आ आपनकर मॉडल आंसर्स गोटे दिन आगु आपण ता पढुछन बट सेठी 2 आवर्स लाइव लिखुछन ओके दैट इज मेनली फॉर जो माने ए वर्ष लिखिबे बट जदि आपण 2-3 इयर्स पे आगु को पढुछन आ एते टाइम भी आपण नाही प्लस पूरा 2 आवर्स बसी 10टा क्वेश्चन लिखला को टाइम होनी त आपण गोटे गोटे भी क्वेश्चन लिखि पारिबे ओके द मेन थिंग इज टू राइट इन द प्रॉपर स्ट्रक्चर एग्जाम रो रिक्वायरमेंट कोन आपण लिखुछन केम ओके आउ गोटे जिंस देन कहले 10 मार्क क्वेश्चन रे दरकार नाही प्राय सेटा हमें नेक्स्ट सेशन जतो हबो क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 टी फिगर्स ओके किंबा लॉजिकल डायग्राम्स परिका सेटा देखिया पे पड़िबो बट एट द सेम टाइम बहुत जनकर खाता रे मु एटा देखुची कि से माने बहुत ही स्केलेटल किंबा गोटे क्वेश्चन आसी जी ओके सी खाली क्वेश्चन रे 2 लाइन इंट्रोडक्शन दोचंती तापरे से टाइप रो डायग्राम कर दोचंती ओके दिस इज यू नो व्हाट दिस ये वाला डायग्राम मोर ठीक अछि बस सरला अरे सेमिति मार्क मिडिबोनी एटा केते बेले करा जे एटा सेते बेले करा जे मते समय नथिबो तळ मो पाखे 10टा पॉइंट अछि ओके आ मु रिप्रेजेंट करि परनी 7 मिनिट रे ताहले ठीक अछि 4टा पॉइंट लेखि कि तापरे एटा मु एमती करी
ओके अब सेटा खाली जस्ट वन लाइन इंट्रोडक्शन और से फिगर टा तापर वन लाइन कंक्लूजन यू नॉट गेट मार्क्स ठीक अछि तो जो फिगर्स के डायग्राम्स करिवे तारो भी केमिति यूटिलाइजेशन होबा कथा सेटा भी आपन बुझिया पे पड़िबो ओके सो यू कीप ऑन राइटिंग एंड ओके देखंतु आउ कोन एक्स्ट्रा आपन सतरे ऐड करि परिबो ओके करंट अफेयर्स रु सबोडे किछि किछि ऐड होबो एटा मेनली सोशल इश्यूज इकोनॉमिक्स ओके हिस्ट्री रे एते आज जो टेस्ट में डिस्कस करूछु टेस्ट नंबर 2 दैट इज बेसिकली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर तो सेथरे au एते स्कोप नाही कि आपण मिसेबे ओके किछि करंट पे बट आसी पारे जेमति कि लेट्स से आपनकर हरप्पन सिविलाइजेशन जो ऊपर जदि आसीला तो राखीगढ़ी रो रिसेंट एक्सकैवेशंस ऊपर हमें कहि पारि ओके किंबा द कंप्लीट डिबंकिंग ऑफ द okay Aryan invasion theory so the AIT Aryan invasion theory is now being accepted as Aryan migration theory Aryans were not invaders invade not late सेटा nationalist historians माने को नांती सेटा neutral historians माने कहउछथि जो माने DNA sequencing करिया करिकि से मान तांगर ओके प्रॉपर जहा तांगर फाइंडिंग्स माने बाहर करछन तो सेटा हमें दे परिबा व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस काहेना इवन हिस्ट्री करी करे भी किछि करंट अफेयर्स जोटा कि रेलेवेंट थिबो सेटा ऐड करियो ओके एनीवे सो नेक्स्ट क्लास रे हमें क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 जोटा कि 15 मार्क क्वेश्चन ओडा व्हिच विल एई सब क्वेश्चन में 7 मार्क आपन को 7 मिनिट दिया होतला ओके दीस आर ऑल 12 मार्क्स क्वेश्चन 15 मार्क क्वेश्चन by you will get around 10 minutes to write okay fine if you have any doubts you can ask or else we Sir, will stop here total. Hello. Sir, total how many tests करिया एटा डिस्कशन okay fine so we'll stop here then next session में हमें second part को discuss करेंगे thank you